Hello viewers, today I am going to tell you a amazing update of uh, YouTube. That is a sneak peek clip for all and comparison of two videos in analytics. And fabulous question asked by someone which I will show you in clip. For that you have to go to the home channel where you get a clip which I have made yesterday. This is the clip through which you get the amazing feature of the YouTube, and you can see video. Now, previously they were only available to channels with 1,000 subscribers, but we're happy to announce that the eligibility criteria has changed and now all channels are eligible to use these two features. Next up, we have something that's really going to interest anybody who likes looking at their analytics. What we've done is implemented a new feature on desktop in Analytics, which will let you compare your video's performance over time. These dot plots will allow you to track your performance over the first 24 hours, first 7 hours, and first 28 days of your video's lifetime on the platform. To get this report, just go to Analytics, click on the Advanced mode, Compare To, and select First 24 Hours Video Performance. Here you can see your top, bottom videos over time. In the example, every dot on this chart is a video in its first 24 hours. You can also hover over the graph video. Now, previously, तो आप अब वीडियो बाय वीडियो आप क्लिप का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। दूसरा, एक क्वेश्चन किसी ने किया है जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि जो हम लोग स्पीड अपने वीडियो की कम या ज़्यादा करके सोचते हैं वॉच टाइम बढ़ा लें, वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए आपको बताया है कि and now अगर lastly, we have our favorite bit of any news flash, which is your questions. And that means I have to put on my glasses so I can read this fabulous question comes from Marco E. Jimenez Pozenza, who asks, out of curiosity, if a video is 10 minutes long, but speed is ×2, then I just spend 5 minutes watching the video. Therefore, it would be interesting to know how the playback speed is showcased on Creator Studio. Well, we followed up with the team who have clarified. In this case, the watch time numbers you see in Analytics will be 5 minutes, not 10 minutes. However, now lastly, we have our favorite bit of any. तो आप जो ये सोचते हैं कि हम स्पीड बढ़ाकर अपने कंप्यूटर की 10 मिनट की 5 मिनट में देख के उसका वॉच टाइम 10 मिनट ले लेंगे, तो वो नहीं मिलेगा। या आप स्पीड कम करके बढ़ाते हैं तो भी वो कम करके आप रन करते हो सोचते हैं कि रन टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, तो वो भी नहीं मिलेगा। बस सबसे खुशी की बात ये है कि क्लिप सब लोग बना सकते हैं। और क्लिप कैसे बनाते हैं उसके लिए आपको चैनल पे जाना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे जाइए, यहाँ पर आपको क्लिप ऑप्शन मिलेगा। क्लिप ऑप्शन को आप सेलेक्ट करिए और जितनी दूर का आपको लेना है उतना दूर का लेकर के आप उसका क्लिप इसको क्लिप बना सकते हैं। आप यहाँ पे टाइटल डाल They दीजिए। wanted to have a way for viewers to highlight fun and interesting moments on live streams in particular. We spent a lot of time thinking about how to best integrate this feature into YouTube. For fun, Because YouTube is the home not just for try live streams, fun, but also for और a यहाँ पर massive library शेयर of all क्लिक the करिए। VODs. जब that शेयर you क्लिक all have करिएगा uploaded. तो We ये knew that we can make something really special that जिस could address प्लेटफॉर्म पे आप both जाना these चाहिएगा उस VODs पे as well चले as live जाइएगा streams. और So यहाँ today से I'm आप happy to लिंक share with you कॉपी कर clips, सकते हैं। a fun इसको way एम्बेडेड भी कर सकते हैं, जिस उसमें चाहिए उसमें एम्बेड वीडियो कर सकते हैं, अपने वीडियो के अंदर डाल सकते हैं। जो हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं उसकी जगह यहाँ पे एम्बेडेड वीडियो में आप डाल सकते हैं। इसको यहाँ से इसका ये जो स्क्रिप्ट बता रहा है उसको आप कॉपी कर सकते हैं और इस क्लिप इसको आप अपने वीडियो में डाल सकते हैं। API रेफरेंस डेवलपर सैंपल ये सब दिया हुआ है। ये स्क्रिप्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें बनी बनाई स्क्रिप्ट मिल जाएगी।
और उसको एम्बेड कर लीजिए आप। तो इस तरह से आप क्लिप बना करके अपने कंप्यूटर पे यूज कर सकते हैं, अपने वीडियो के अंदर यूज कर सकते हैं। So this is all viewers today, and if you like it, please share and subscribe. Thank you.